Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Indian Institute of Technology, Patna, I welcome you for this panel discussion during the workshop on promotion of research infrastructure and entrepreneurship in science and technology. Before we begin with the panel discussion, we have with us Dr. Anand Deshpande, Chairman of the Board of Governors, IIT Patna. He'll deliver the opening remarks, and after that we'll have the panel discussion. A brief introduction about Dr. Deshpande. He is the founder, chairman and managing director of Persistent Systems and is responsible for the overall leadership, strategy and management of the company. Dr. Anand holds a B.Tech in Computer Science and Engineering from the Indian Institute of Technology, Kharagpur, and an MS and a PhD in Computer Science from Indiana University, Bloomington, Indiana, United States of America. As a true technology visionary, Dr. Anand's strengths lie in identifying and investing in next-generation technologies and encouraging internal entrepreneurship to ensure that Persistent System stays at the forefront of technology innovation. Dr. Anand has been the driving force in growing Persistent Systems from its inception in 1990 to the publicly traded global company of today. He has been recognized by his alma mater, IIT Kharagpur, as a distinguished alumnus in the year 2012 and by the School of Informatics of Indiana University with Career Achievement Award in the year 2007. Prior to founding Persistent Systems, Anand began his professional career at HP Laboratories in California, where he worked as a member of the technical staff from May 1989 to October 1990. Dr. Anand has served numerous positions at various professional and non-profit organizations, for example, NASSCOM's Executive Council, ACM India, where he was the first president, Software Exporters Association of Pune, Pune chapter of Computer Society of India, CII's Pune Zonal Council, trustee in the Computer History Museum, Dean's Advisory Council in the School of Informatics, Computing and Engineering of Indiana University, and member of the Executive Committee of MCCIA. Dr. Anand is a founding member of iSpirit, India's first product think tank, started with the vision of creating a vibrant entrepreneur ecosystem in India, and is a founder member of Inter-Institutional Inclusive Innovation Center, I4C. I4C is an independent non-profit entity which acts as a platform to proactively scout, showcase and handhold technology innovations. Currently, he serves as a trustee of the VNDP Endowment of VAIF and a trustee of Persistent Foundation. With members of his family, he has established D. Astra Foundation, a non-profit entity which focuses on creating self-employment. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Dr. Anand. So first, good afternoon to all of you, and thank you very much for inviting me to this really important session. I wish I had planned this a little better. I'm in Delhi today. I could have been in Patna. It could have been more. I've been waiting to find an excuse to come, so hopefully in the next 3 months I'll find a way to be there in person. I find that IIT Patna has this amazing ideas of creating these interesting acronyms for events, so I'm kind of surprised about priest and entrepreneurship and how they relate to each other. But that said, it's really a pleasure to be part of this event. Entrepreneurship, especially in science and technology, is really important, and I'm really glad to see IIT Patna take the leadership in trying to set up a promotion and various other activities to enable entrepreneurs in this area. Entrepreneurship is very critical for our economy. As you would expect, with a population of almost
2.5 crores or 25 million at every age group. We need more than 15 million jobs. And the biggest problem that we have is to create job creators rather than job seekers. And I'm delighted that IIT Patna is thinking in this way. All the students in IITs now should consider themselves very privileged and use the opportunity to become job creators rather than job seekers. And it's really good to see some very young entrepreneurs on stage today who have been working in various areas that can inspire the students to do something more interesting and fun rather than just seek the first job that is available on campus. I know you have a long day ahead and a couple of more days tomorrow. A few suggestions that I would have to you all as you think about it is that one is that as an entrepreneur, you have to remember that you cannot be afraid of failing. The reality of entrepreneurship is all about learning from mistakes. So the aim has to be to say, how do I learn from my mistakes and keep moving? So when we talk about entrepreneurship and various other things that we will discuss in the next few days, and as students, I would like to encourage you to take the risk, become an entrepreneur. And it's not the end result as such, but the journey is equally exciting, and you will learn a lot in being an entrepreneur. The second thing I want to leave with the group at large is to say that, and this is for IIT as well, I somehow believe that, governments and IITs should focus a lot on exits of startups and companies rather than focus a whole lot on enabling companies to happen. Because I believe that the economic forces will take care of itself and you will see good companies happening if people who invest in these companies get a way to exit the company. So I think it would be nice to see the government or the leaders who are responsible for such things find ways to enable the companies to exit, because when you exit, that's when the real money is made and that's the opportunity for everyone to go on further. So I'm really delighted that you're hosting this event. It's my pleasure to be part of this at the beginning, and I'll stay on for some more time to listen to the deliberation, but I want to hand it back to the organizers and wish you all the very best, and hopefully in another few months I'll have an opportunity to come there in person to meet you all, and I look forward to that. Thank you very much. Thank you, Dr. Pandey, for your motivating words, and we hope to see you soon on the campus. It's been a long time now. For a panel, we have our panelists here, and our co-moderator is Dr. Yatendra Singh from the Department of Electrical Engineering. So if you could join us in the front. So, when we go through, I'll introduce the panelists to you. We'll have questions to them and we'll do it one by one. In the meantime, if the audience has any question, please pass your question to Dr. Singh so that he can take it up later. So I would like to introduce the panelists first. So we have Shri Rajesh Kumar Pathak, Secretary, Technology Development Board, DST. Civil Service Officer of IP and TFS cadre. He holds a bachelor's degree in engineering, civil engineering from University of Roorkee, which is now IIT Roorkee, and a master's degree in technology from Indian Institute of Technology, Delhi. He also did his postgraduate diploma in public policy and management from the Indian Institute of Management, Bangalore. During his 25 years long service career, Shri Pathak has held many challenging assignments in central government ministries, urban local body, special purpose vehicle, government PSU, and autonomous statutory bodies. He has a vast working experience of various government functions like accounts, finance functions, administrative and audit functions, regulatory and statutory functions, policy formulation and implementation, financial management, taxation, tender and contract management. Prior to joining the Technology Development Board, he was holding the charge of Member Finance in Inland Waterways Authority of India,
a statutory body under the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Government of India. He has also served as an officer on special duty to Member Finance Telecom Commission and later to Secretary Department of Telecommunication and Chairman Telecom Commission, now Digital Communications. Our next panelist is Professor Deshdeep Shahdev. He is the chairperson of DDP panel, DST IIT Kanpur. He joined the physics department of IIT Kanpur after teaching and researching in leading groups at Cornell University, University of Pennsylvania, and the International Center for Theoretical Physics, among others. While at these centers, he worked and interacted with several Nobel laureates. Professor Shahdev has contributed to several branches of physics. He was a co-discoverer of radiation zeros and of their use in determining the anomalous magnetic moment of the W boson. We have three young entrepreneurs with us. We have Shri Tanmay Bunkar from BotLab Dynamics. He took his first UAV flight, and by 2014, he and his team were asked to deliver 8 drones that would join the Delhi police. This reaffirmed the faith in drone technology and its future in India. We have Divyanshu Verma from Redendant Innovation. He is the alumnus of IIM Bangalore, IIT Delhi, and BHU with more than 21 years of experience in technology R&D, business strategy, cyber security, SDLC, networking, IoTs, hardware and software security compliance. And our final panelist is Shri Prateek Sharma of NanoClean Global Private Limited. Prateek Sharma is an experienced entrepreneur with a demonstrated history of working and building a startup. Skilled in business development, public speaking, business strategy, leadership and team management. He is a professional with a BTech in civil engineering from IIT Delhi. A warm welcome to all our panelists for the day. And the topic that we have for them today is entrepreneurship, challenges and opportunities. So we would like to begin with Shri Pathak ji. What are the opportunities that you see for entrepreneurship in today's India? Good afternoon all. As I think I might take few minutes. All three of us sitting here, Divyanshu, me, and Professor Shahdev has spoken about ourselves, about 2 young entrepreneurs who is really done wonders for startup. So before answering your question, if you permit me to ask both of them one by one to share their experience, because they are the first time startup ecosystem domain included by IIT Delhi, so that their experience will be more useful for the budding companies which is incubated in IIT Patna. After this, I will come back to question definitely. So I think Prateek will start. Thank you, sir. Thank you, IIT Patna. This is my first visit here, and really glad to be part of this forum of such a dignitary, and thank you, Technology Development Board. So I'll start with how I jumped into entrepreneurship right after my graduation, or rather, I was pursuing this even while I was studying at IIT Delhi. This journey never started when I figured out, okay, there is some problem and there is some solution which can be addressed. But this is more towards answering to a personal problem. I'll give you a background of mine. I belong from Bikaner, Rajasthan. And there in our region, there is a general problem of sandstorms. That is a common phenomenon in that region. And I have witnessed this problem every other day in my home,
when I saw my mother suffering from this problem, and she was severe asthmatic. So that was the pain point of mine which I wanted to address, and I was always annoyed because my mother had that peculiar habit of covering her face with that dupatta. क्योंकि धूल इतना ज़्यादा होता था तो उनका आदत रहता था कि मैं अपना फेस को कवर रखूंगी दुपट्टे से. Maybe with that thing she feels more comfortable. But I was always like, यार इससे better solution तो हो सकता है. I came to IIT. I got to know various technologies. I got associated with a few of the professors who are now my partners in this venture from the textile department, who assisted me in building this remarkable technology which can filter PM 2.5, which can filter bacteria, viruses and whatnot. And it doesn't cover your face. It doesn't go inside your nostrils. And if you can see, I'm using one such product on my nose right now. This is a product which is now at par effective with an N95 grade face mask. And this is the solution which I later on provided to my mother first, and then now on the course of solving this mega problem of air pollution and a problem which mainly asthmatics or the people, those who are suffering from respiratory disease, are facing on a daily basis. Believe me, in India, out of every 6 child, we have at least one of them suffering from asthma or some kind of a respiratory disease. At least 10 out of 10 people in India, one of them is suffering from respiratory disease. We have 14 Indian cities amongst the top 15 polluted cities of the world. This is the mega problem of this decade. So, with our product, with our invention, and with the design which we have come up, this is a convenient and at the same time safest solution to the problem of air pollution. So that's the journey, and I started with my incubation at IIT Delhi in 2017. I incorporated this venture with my professors, those who assisted me, Professor Agarwal and Professor Jassal in textile department. We launched this company in 2017. For about 2 years we stayed in our incubation period, and we then went out into the market. And we are doing fairly good into the commercial market also. And right now, when I'm speaking, we have channel partners in more than 30 countries worldwide. We have covered all the countries in Asia that also include country like Pakistan, where we have channel partners. So that's the reach which we have achieved. And next month we are launching this product in UK and in Netherlands, because there is another problem of developed nations, which is pollen allergies. 25% of the people in UK are suffering from hay fever. So this product has the capacity, this Indian product has the capacity to solve this global problem. So that's about us, sir, and I'm happy to share more. I will request Tanmay to please speak about his experience. Am I audible? Yes. Hello, I'm Tanmay. I will start by thanking TDB for giving me the opportunity to come here and speak to all of you. As I was when I was told I was supposed to come to IIT Patna to share my experience, and where do I start? That's what I will tell you a story. So, when I was about 12 years old, I learned how to open a car. My father was a cop. He was a decorated police officer. And as a kid, you don't understand why your dad carries a gun. And as you grow up, you realize that not only the gun that he's carrying is not made in India, it's not designed in India. Many other people in uniform have the same problem, where they are asked to do their duty with an obsolete bit of kit. Then I realized that why can't somebody do something about it? And I realized why somebody else should do something about it. You should do something about it. So I realized that the only way that we can
be strong as a nation is by making what we need within our borders. When I joined IIT Delhi, at that point India was trying to buy these Javelin missiles. Now it's in the news a lot nowadays because of the Ukrainian war. What it is actually a shoulder-fired weapon which can take out tanks and low-flying aircrafts. So एक सोल्जर के पास एक राइफल होती है, उससे वो टैंक का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर जावेलिन आपके कंधे में है तो आए तो सामने से कौन आया? Now that missile was made in USA. It was 90 lakh rupees per piece. You have just entered IIT, you think you can make anything, and you do not realize how difficult it would be. So you start. And from the get-go, I realized that the most expensive part of a missile is the electronics. So I started making the navigation computer that goes on a missile. Funny thing is, the same thing goes into a drone, the same thing goes into a satellite. It's the same combination of sensors with some different logic. That's how I got started. I never had any intentions of becoming an entrepreneur. But time and conditions were such that it necessitated that I have to fund my own research. I have to find people who will believe in that idea. It just happens to be that I've been very fortunate that people who could have very easily said no kept on saying yes, and that's how I've gotten here. So I would again thank EDB for saying yes when I asked them for money to make something that nobody at that point believed in, and then getting me here to talk about it. That's the thing. In fact, I just said yesterday again at the cost of repetition again, Tanmay and his team is by his dedicated hard work, we financially supported. This is our duty. That's a job given to us to support those risky ventures, those others are not interested. But you guys just made us proud on 29th of January. That after meeting we did parade 1,000 drones soared in the air, and let me again announce, Bihar government is collaborating with his team to celebrate Bihar Day, and probably if everything's settled, then you will see some drone show in Patna organized by Motlab Diamonds. I just ask both of you, what are the challenges, before that let me answer the madam's question, because I promised after you guys will say that I will say something about it. Look, my point is, now, as I said yesterday, I believe this decade as a decade of entrepreneurs. There's no second thought about it. In fact, I was discussing with one of the senior person in DST who is making the science policy. I said, Akhilesh Gupta जी ऐसे डिस्कशन हो रहा था. मैंने उनको कहा कि भाई आप ST IP आप छोड़ो, इनोवेशंस तो होती ही रहेगी. अब नेक्स्ट स्टेप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पॉलिसी बनाओ. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें क्या डेवलप करना है, यदि आप उस इकोसिस्टम को टच करते हो, इनोवेशन अपने आप वैसा बनता जाएगा. सो मेक इट ए स्टेपिंग स्टोन for future India driven by science and technology and startups. So as you all know that the startup ecosystem, people has now started taking risky ventures. जो पहले जब हम लोगों ने आईआईटीज की थी तो उस समय ड्रीम था कि भाई किसी तरीके से नौकरी हो जाए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे. अब वो चेंज हो गया. अब हम अपने मेरे दोनों बच्चे फॉर्चुनेटली एक आईआईटी से एक विश्वविद्यालय से उनको कहते हैं सिविल सर्विसेज दे दे, कहते हैं रहने तो बहुत हो गया, मैंने देख लिया. So they are more risk oriented. जैसे कि I will do something on my own. अभी तो मैं सीखता हूँ, उसका I will start my own venture. So that changes has come, and somebody was telling
that parents are also not accepting these things. Not somebody, the artist himself, the chief guest himself said the cultural change is happening, which was not there at that point of time. But that's not true, that's a fact. The parents are also started accepting that people in their wards and every fields, not even science and technology, other fields also take risks. So the time is changing, India is changing, and so there is a great scope. And I think in Bihar, the idea of this workshop was let IIT Patna lead the way, take all other technical institutes, including agriculture, everywhere where technology can be used, and drive this need in this state. So now having answered your question, I will just ask both of you, what you think are the, since you are the first generation started these companies, you think your challenge or advice to that budding entrepreneur outside, you have seen so many guys are there, advice for them, what do you look for? After that, then Professor Sadev and Divyansu. So, with my learning, I'll share the problem which I faced because of my lacking in the market research in the year 2017. We entrepreneur always get obsessed with the product which we have developed. हमें उससे ना इतना लगाव हो जाता है, हमें लगता है सब कुछ सही है इसके अंदर, पब्लिक कस्टमर उसको पसंद करेगा ही करेगा. बट बिफोर लॉन्चिंग एनी ऑफ योर प्रोडक्ट, और जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट प्रोटोटाइप स्टेज पे बना रखा है, अबाउट टू गेट लॉन्च्ड है, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन करने वाले हैं, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाओ, कस्टमर का फीडबैक लो. कस्टमर ही आपको बताएगा कि वेदर दे वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट, और इफ दे वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट एट व्हाट कॉस्ट दे वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, इन व्हाट शेप एंड साइज दे वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट. ये चीजें कभी भी एंटरप्रेन्योर को मिस नहीं करनी है. सो मार्केट रिसर्च इज द फर्स्ट most essential part, is the essential most part of launching your product into the market. उसके बिना collapse होगे ही होगे. You will not even realize कि कब क्या गलत हो गया. Always back this product launch with a thorough market research. I'll give you a case study how we select our channel partners. हमारा usually focus रहता है कि how we get associated with more and more channel partners. उसके आगे का strategy रहता है how we can work with the doctors referrals. But जैसा कि मैंने बताया कि we are there in other countries outside of India as well. So a product which is a right fit for a country like Saudi Arabia. So Saudi Airlines के अंदर our product was getting sold at one point of a time. The same product will not work in a country like UK because उनके लिए वो product का shape and design या color बहुत different होने वाला है with the color which a Saudi Arabia guy or a Ghana distributor would like to sell. So ये सारी चीजें आपको market या आपका distributor ही आपको आगे बताएगा. हम सबके अंदर first अर्ज ये होती है कि यार कैसे अपना है ना first sale को जल्दी से जल्दी achieve करें, बड़े से बड़ा उसको first sale करें. But थोड़ा सा पॉज लेके एनालाइज करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये एक वन डे गेम नहीं है. दिस इज अ लॉन्ग जर्नी एंड यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू लर्न एट एवरी पॉइंट ऑफ अ टाइम, एंड उसी इवोल्यूशन से आप एक लंबी स्टोरी लिख सकोगे, एक लंबा इतिहास बना सकोगे. सो दैट्स द फर्स्ट टेक व्हिच आई वांट टू शेयर. ऑलवेज बैंक योर प्रोडक्ट विद अ थॉरो मार्केट रिसर्च. I think I'll share my recent experience. एक मेरी शिकायत है शायद हर किसी से जो ये बनाता है, तो क्या है कि हमारा ना एक एटीट्यूड होता है कि चलेगा तो ठीक है, एक डेंट है उसमें या कुछ चीज़ हमें रिवर्स करनी पड़ रही है. हम कुछ बनाते हैं, हम भूल जाते हैं कि देखिए आपके हाथ में चल रहा है. तो मैं तो ला लूँगा, लेकिन it has to work in your customer's hand. It has to be maintainable, it has to be serviceable. वो एक ऐसी चीज़ है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि
मेरे हाथ में चल रहा है लेकिन किसी और के हाथ में अगर चलेगा तो क्या क्या गलती करेगा. You have to make something that is, I should not say this, but idiot proof. It should work in anybody's hand. So just a small experience. हम लोगों ने एक ड्रोन बनाया, एकदम हम लोग उसको बना रहे थे, 2 वायर्स रिवर्स हो गई. बहुत छोटी सी गलती. हम उसको नजर क्या दिक्कत है यार, 2 वायर निकाला, वापस लगा दिया, चल रहा है कि सिस्टम आराम से. जब उसके 1000 पीस ऑर्डर हुए तो गलती उसके अंदर थी. और मजा ये किसी ने नहीं पकड़ा उसको समय, क्योंकि वो चलेगा या चलेगा, ठीक है ना, क्या चलेगा, वो एटीट्यूड वहां पे था. तो जब आपका सारा सामान तैयार है, आप 1000 ड्रोन असेंबल करने के लिए तैयार हैं, और एकदम आखिरी मोमेंट में आपको समझ में आता है अरे यार 1000 वायर्स उल्टी करनी पड़ेगी. तो अब ये मान के चलिए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, ये मत सोचिए कि एक छोटी सी गलती है. उस गलती को 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर देखिए कि उसको सुधारने में आपको कितना समय लगेगा. अगर आपको तभी वो छोटी गलती लगती है तो बिल्कुल फिर वो छोटी गलती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आई थिंक अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे कि 0 मिस्टेक्स, 0 एरर्स, एटलीस्ट इन द डिजाइन फेज. प्रोडक्शन में नहीं कहूँगा, लेकिन अब डिजाइन में आप जितनी गलतियां बचा लेंगे, प्रोडक्शन में वो आपको उतना समय बचेगा. That is my advice to anyone who's designing a product, because I think you are in the product design stage as well. Now request Divyansu. थैंक यू सर एंड थैंक यू टू एवरीबडी. मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और आई रिलेट अ लॉट विद इट कि जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं देयर हैज टू बी स्टोरी बिहाइंड दैट. तो मैं साइबर सिक्योरिटी में एंटरप्रेन्योर हूँ, एक IoT सिक्योरिटी के ऊपर काम करता हूँ. तो इसका जेनेसिस D26 था एंड वन ऑफ द पर्सन आई नो हु डाइड, मेजर संदीप उनकी, वी नो हिज फैमिली. उस दिन यही था कि अगर संदीप को पता चल जाता कि उस रूम का CCTV कैमरा से वो देख लेता तो वो बच जाता. एंड बिकॉज आई वाज ब्लाइंड, अदर गाइस वो ऑलरेडी पता ही नहीं था अंदर कितने थे, तो उन्होंने मेरी गोली मारी और उस बंदे का लंग्स फटा हुआ है. तो दिस स्टोरीज केम और आई यूज्ड टू वर्क इन ब्रॉडकॉम and I knew how to hack into CCTV camera that time. I was very young and we almost cried like 2-3 of our friends कि ये नॉलेज है और हम सफर कर रहे हैं. इवन though I worked on 9/11 station now, तो एक स्टोरी होती है हमेशा जो कि आपको इनके साथ भी आई, इनके साथ भी, मेरे साथ भी, लोग से थोड़ा बड़ा हूँ, 97 में I did my master's. So that's all. Now coming to the point कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलता हूँ, fail faster so you can succeed sooner. आप अपनी जितनी गलतियां पूरी कर लो ताकि कस्टमर के पास आए गलती करने. और उसका एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट के प्रति सबसे क्रूअल हो, जैसे मतलब कहते हैं पिटाई बच्चे को थप्पड़ मारता रहता है और हम लोग की बहुत पिटाई हुई नहीं देते समय, तो आप कर जाते हैं. तो अपने प्रोडक्ट के लिए प्यार तो होना चाहिए मम्मी वाला, लेकिन पिटाई पिटाई वाली होनी चाहिए. बच्चा फेल नहीं करेगा, यू नो दैट इट विल मेक इट बिग. और हमारे साथ भी ऐसा हुआ. आई वाज डायरेक्टर विद डिटेल, वेरी लॉन्ग टीम एंड ऑल, बट आए 4 लोग की कंपनी से शो किया. तो पहला काम किया कि लेट मी मेक इट वी कॉल इडियट प्रूफ, वी कॉल इट पप्पू प्रूफ. हमारा एक यूजर प्रोफाइल है कि ये बंदा अगर चला लेगा, इसको कुछ नहीं आता है, तो दुनिया में सब कुछ चला लेगा. और आइदर एनीबॉडी बाइज और डजंट बाय, वी टेस्ट आवर प्रोडक्ट एवरी डे. हमारा जो टेस्टिंग साइकिल होगा 365 डेज चलता है, बिकॉज हमको ये पता है इस प्रोडक्ट में कोई गलती है जो मुझे नहीं करती और वो कभी कस्टमर के पास आएगा. नाउ हमारे प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी क्या है, वी आर इनटू साइबर सिक्योरिटी. तो कभी एक तो नाम नहीं लूंगा कि एयरपोर्ट्स है जो हमारे प्रोडक्ट रन करते हैं इंडिया में, NDM 9 दिया हुआ है. नाउ इफ द प्रोडक्ट हैज रॉन्ग थिंग, द एयरपोर्ट ऑपरेशन कैन डू रॉन्ग, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. आई डोंट वांट टू शो माय फेस समवेयर वेयर आई नो दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. सो इफ वी आर इनटू अ क्रिटिकल सेक्टर जैसे और हेल्थ केयर है, साइबर है, डिफेंस है, फॉर दैट मैटर एनी सेक्टर, अगर हम अपनी टेस्टिंग अच्छी नहीं करते हैं और हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन budding entrepreneur is fall in love with business, not with the love of product. By what it need be. We started with something else and we started with CCTV security because we thought that this is a bigger market than that.
So if one has to be successful, obviously you should have a passion for that. But keep business in front of you. Think about the product, think about strategy, think about sales, go to markets, think about customer, think about stakeholder validation. Then you launch a business and work for it. So stricter we are, chances of success are very, very high. Thank you, Divyan. So now may I request Professor. Now I will please. Well, it's difficult to speak about all the challenges that because my journey has been very, very different from this one. It's sort of I got into entrepreneurship very, very reluctantly and in steps. And at every step, I was wondering whether to now go further or to stop. So in contrast to all these people, I try not to get into all the technicalities of actually building things myself. I was working with students in IIT Kanpur, and I was watching the best students all migrating to the US, and I was wondering how to really keep them there and what types of challenges I could give them so that they would find it interesting to stay on. And it wasn't difficult to train very good students, but this was one of the challenges. And so we decided to try building things, and I got them involved, a certain number of people involved. But in the first phase, we were unsuccessful with everything that we tried to do. And then we sort of piped down, and we decided that we would make it simpler and simpler and simpler till we came down to just a product which involved only electronics. The first set involved all sorts of things in all sorts of fields, going from materials to this and that. And many of the things that we had tried doing, the first thing in fact that we tried doing was an MRI. And I taught a whole course on magnetic resonance imaging and on different aspects of it. But those are machines which cost $2 million each. And the number of fields that were involved in just understanding how to make it work, and the amount of evolution that had gone in, technological evolution was just so high that we got nowhere close to the goal. And then the next least complicated thing that we were thinking about was a scanning tunneling microscope, which is the one that we eventually built and which we are now building it at world-class levels. But it took a very long time, and it took a long time to start believing that it would actually be done. And right through that period, we were, in fact, I was the laughing stock of the whole institute. People would say, oh yeah, my doctor said that the crazy guy who thinks he's going to build a scanning tunneling microscope. Alright. But it didn't phase me out at all. It didn't particularly bother me. But it was, but over time, it took us quite some time. But eventually, once we built it, slowly that confidence has started coming. And now, the first people who had to be convinced were the people in the team itself. They had to really believe that once they decided to do something, it would actually happen. And that took about a decade. I mean, in contrast to the experience that these people have had, it took easily 10 years before that particular belief came. But once that belief has come, now it's just taken for granted that once we decide that we want to build something, it will happen. That much will happen at least. Now the next question is, how efficiently can we build? And at what levels? What are the specs? What are the intermediate ones? Anyway, so this was one of it. One of the things that required just the sheer level of confidence, all right, which is by and large because the success stories are so few and far between, right? I mean, it's great to have this thing that, that all this is happening, but until we have many more success stories, it's very difficult to start believing in success as a culture.
mean, most people, so that was one challenge. I guess another challenge was, as all of them have mentioned, we weren't even looking at the market. We were just trying to see whether the product itself would be good. And after we built it, that's when we started looking at the market and decided that that was the wrong product to build. Okay. And I mean, that feedback could have been taken, but it just seemed totally unrealistic. I mean, to really explore the market long before you even believe that you could build the product seemed crazy. But now, exactly, I mean, this is our experience also. Long before we built the product, we just claimed we built it. Right? And we go to the market and say, look, we got this product, would you like to buy it? And then we try to figure out whether people say yes or no. And only after we get a certain number of yeses do we then tell the development team that, all right, go ahead. So, all right, so I'll just say this much and then hand this back. Alright, talking about other challenges. Alright, GEM is a challenge itself because the website doesn't work and it doesn't allow you to move forward. Neither can you move forward nor backward. So we actually went. I'll tell you about them. बहुत देर के बाद उनको ये सद्बुद्धि आई कि just put it using they have a certain number of criteria. It's like, so under GEM, whether you build a Mercedes or you build a Maruti, you say कि कार है, चार दरवाजे हैं, चार पहिए हैं. Now you compare the prices and you buy it. Only the Marutis can sell. I mean, they have anything above that won't sell. After that, they brought in a custom bid. No, custom bid I am telling you, you wanted to sell your product. That's good. So it is better to sell the product to the government agency from to GEM. It is better for you. I am telling you. We have succeeded on two products so Get far. registration on that. It will be better. Two products so far, but always custom bid. Thank you, gentlemen, for your interesting, sharing your interesting experiences. So I guess business and strategy are, and marketing are three of the key terms that we take away from here. So you design, you market, you sell, and I mean gem is gem. It's actually a gem. It's a rare gem that you won't find anywhere else. So we can't do much about it. I'm inviting questions from the audience. If you have any questions, yes, Akshay. Thank you for giving me the chance to question and welcome you all here and delighted to have you. My question is, most of this, I am a PhD student here. So the thing is, we develop something in lab, but converting that lab model into final product, how we faces some challenges because lack of knowledge and how to convert that into the final product. It's something which is challenging. And one more thing, how to do it fast. So I just need your suggestions for that. We are having to. Alright, there is a general rule that is called the 80-20 rule. And it's just sit down. So the first 20% of the product the first 80% of the product takes 20% of the time. The last 20% takes 80% of the time. It's perfecting it. Just a proof of concept can be done very, very fast. So it seems to be moving very fast. It's when you get into the final nitty-gritty details and making sure, as was mentioned, that it is going to work in the hands of every single person, making it idiot-proof.
just working out. I mean, there are a number of products that we have developed, but we've just not ourselves been able to take it through. I mean, a small thing like, I mean, we've been developing an atomic force microscope, but just making the tips themselves. For this one, we just have not been able to make them in any really efficient way. And mounting them, the whole process of mounting tends to, I mean, there is a fear that it can damage part of the thing. And we just have not been able to work around that. So it is that last bit that takes an enormous amount of time. And lots of people sort of feel that they've got, and I've actually gone around and met people in many institutions where they have some sort of a working prototype. But converting that into an actual product is still, 80% of the work still needs to be done. So that's why when people are coming in, I mean, we've also been evaluating many of these products. So one is now so we also have to then evaluate whether this thing, that 80% will actually be crossed. That's one. The second thing is that when we are looking at these proposals, one thing that people, I mean, so these details are important, but one other thing that is almost always missing in the presentations also is a very clear concept of what it is that you're actually trying to build. What will the product finally look like? And that is something, so whenever people are writing proposals, that is the first thing I request them to do. In a very short abstract, they tell you that this is the product that we are building and these are the potential users. After that, you can try getting into the details and you would say that this is how it's going to be used. It's when you get down to the user details, right? That's when all these difficulties come, because you're assuming that the user is just a layman. So, I mean, let me give you an example. Right? You build a television, right? And people know, and you know, all of us, you know, turn the television on and off and change channels and change the volume and do all of that. And that's what the user does. Behind it, there's a lot of electronics, there's a lot of other stuff. Those are things that the engineer has to worry about. But if you start by making a presentation describing the electronics without telling us that it is a television that you're making and these are the things that you'll be able to do on that television, you'll be able to change the channels and you'll be able to watch this and you'll be able to change the sound and so on, and you'll be able to adjust it. Alright? That is what you have to first state, that this is what I'm making. Now you can go ahead and say that, alright, this is how I'll make it. We evaluated hundreds of these projects, and I can tell you from experience that most people were not clear about what it is that they were making, whereas they were getting into all the technical details and it was almost impossible to pass those projects. So these are two things that you have to keep in mind. The last bit where it is, you know, that 80% thing and making it user friendly and so on, right? I'll give you again a couple of examples which may help you. I mean, there's a person who's talking about. Professor he asked that, suppose he made a product in the laboratory. Right. And he wanted to make further steps to go. Right. What was the one line sentence to this? I'll tell you very simple. I respect sir. My whole team has, I come from a very strong industry side, right? Where we have developed chips in 18 months, 9 months, 4.5 months. Idea is how much you will use. Don't try to build a Taj Mahal from the scratch. That's the one thing I keep telling you. There's enough technology out. Know how to package it. When this first phone, iPhone came, we could not forward the SMS in that, but it sold like hotcake. So understand the customer. What is what we call MVP, minimum viable product, build that first. But build a product, complete package culture to develop it out.
After you do iterative, this should not take you more than 3 to 4 months to build something not that complex to build. That's very complex what first. But normally when you get you have done 4 years research in industry, in PhD as a lab, you have to make it in next 18 months the product out of it. So, and do a little bit of product engineering and design thinking in your course. That's what. Okay, that's absolutely right. There has to be a minimum viable product. Right now, but get it all the way out to the user specs. So how will the user be doing it? How will the user be working with that particular product? That has to be clear. And work backwards from there. Any other questions? Yes. Yeah, I'm Murali Vikramaditya. I'm the committee of IIT PATNA. I do agree with everyone. You all talk about the market search, good product, quality product that's coming to market. But in the Corona time, I found here, when Corona started, there was a flood of, false oxygens. And 60% of them was that. They were giving wrong results. They marked very well. Their business were in crores of rupees. I also started that time, smart contracts. I took time, everyone said that you have to go to the ends for testing and all. I tested in Nalanda MCH. I tested in EMS. I tested in Hyderabad also. It took around 6 months time. Then Corona gone. And I became without money. I was also in the bad phase for Corona. But that market research was very good because that time many customers, many investors told me that I'll give money and you start work. Will plug it to market. But I was failed. Because that time I have not picked up. My institution where I am here said, no, you have to go to the AIMS for testing. You have to go to the different institution. Without testing, you will not go to the market. That kind of timing, I'm not saying you don't go for the testing. You have to go for testing. The time was very important for rating the product. If I had not gone to that kind of testing, I would have been a millionaire, but I failed. So I would suggest also to all of us that sometimes it should not be so tough kind of person when you are making a business. For making a business, it should not be so tough. Sometimes it should be benign kind of where you learn the products. People should know first that the product is for the market or not. Yes. Thank you so much. If we don't have any, Dr. Thakur, you want to say? No question. So if you don't have any more questions, then I would like to request Shri Akhilesh Jha, Chief Controller of Accounts, DST, to kindly share his words of wisdom with the audience here. I think accounts is the most important thing in the life of the businessman, the investor, the consumer. So दो चार शब्द जो कि हम लोगों को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करें. मार्केटिंग करके निकल लिए।
वो बता रहे क्या करके गए हैं। सबसे पहले बच्चे और मैं उनके लिए जो डिस्क्लेमर होता है वो ये कि ये शायद अकेला आदमी है और मैं बैठा है जो साइंस के बारे में, और आपका रिस्क थोड़ा और बड़ा हो जाएगा कि ये बताऊं कि मैं पेशेंट आदमी और वो भी हिंदी का, तो मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं अपनी बात हिंदी में आप तक कर सकूं कि जी राजभाषा है, इसी की तहरीर कर रहे हैं। मैं बहुत उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस भाषा में मैं अपनी बात बेहतर कर सकूं, पर यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगा स्विच ओवर हिंदी में किसी को दिक्कत नहीं। तो आपको कुछ चीजें मतलब एआई की बात हो कि डेटा साइंस की बहुत बात, मैं थोड़ा डेटा ऑफ साइंस की बात, डेटा ऑफ साइंस के बीच में मैं अंग्रेजी के 2 अक्षर रखता हूँ, ऑफ डेटा ऑफ साइंस, that will give you an insight what we are actually doing, and जो IIT पटना उसको क्यों चिंता करनी चाहिए या उसको किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करूंगा अराउंड डेटा। सबसे पहली बात कि आप यदि फाइनेंस को समझते हैं तो फाइनेंस 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट फाइनेंस और एक इनडायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस वो है जो IITs के जैसे यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं या IIT के जो PIs बैठे हैं या स्कॉलर्स बैठे हैं जो फंड के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी देते हैं, आप लोग जो अप्लाई करते हैं, फिर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। आप यदि देखिए कि स्टेट्स में पैसा कैसे आता है तो बिहार उसमें सबसे नीचे है, बिहार को सबसे कम पैसा मिलता है सेंट्रल स्टेट्स में। यूपी है, बंगाल है, इनको बहुत कम मिलता है, बिल्कुल बॉटम में है ये 3 स्टेट्स। ये हो गया डायरेक्ट है, आप पैसा खर्च करते हो तो आपको इन स्टेट से मिलता है। आप यदि नहीं करते तो क्या होता है, कोई साहब मैं आपका तवज्जो चाहूंगा इस पे, इफ यू डोंट इन्वेस्ट मनी इन ऑल द स्टेट्स इवनली, व्हाट हैपेंस इज जब फाइनेंस कमीशन पैसा देता है, फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन होता है, फाइनेंस कमीशन की जो पैसा सारा इकट्ठा होता है रेवेन्यू सरकार के पास, तो फिर हम राज्यों के बीच में उसका बंटवारा कर सकते हैं। उसमें जब आप देखिएगा सबसे ऊपर जो 3 स्टेट है वो बिहार है, यूपी है, बंगाल है। यदि आप वहाँ पे R&D नहीं करिएगा, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, तो आपको किसी न किसी तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा। आप यदि अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाइएगा नहीं तो बाद में उसको सेटल कराने के लिए आप बहुत पैसे खर्च करेंगे, राइट? या आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा दीजिए, उसको गाइड कर दीजिए, या फिर बाद में उसके स्ट्रगल के साथ भागीदार बनने के लिए तैयार है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर इंडियन इकोनॉमी। You don't invest, you don't allocate your resources evenly among all states. Then what happens is, आप कहते हैं कि बिहार को या यूपी को या बंगाल को आप फाइनेंस कमीशन के थ्रू बहुत पिछले 5 साल का डेटा हमने इसमें कोलेक्ट किया है, और इसमें आप देखिएगा कि कहते पिछले 5 साल में S&P ने जो है 2730 एजेंसीज को 20,000 करोड़ रुपए दिए, 20,000 करोड़, राइट? सबसे ऊपर के जो KPI है उसको आप देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद नंबर ऑफ एजेंसीज है इधर, और नंबर ऑफ जो हमने पैसे उनको दिए वो आपके यहाँ दिखता है। अब मैं सिर्फ यदि यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी में करूँ, मैं आपको सिर्फ IIT की कहानी दिखाना चाहता हूँ, सो दैट यू अप्रिशिएट कि आपका IIT पटना कहाँ है या जो नए IITs हैं वो कहाँ पे हैं। सो ये सारे स्टेट का मिला के मैं आपको एक साथ थोड़ी सी कहानी आपको शुरू करते हैं।
तो सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो धारवाड़ और तिरुपति और पटना और ये जितने हैं, पटना को क्यों मिला आप सब बेहतर जानते हैं, 17-18 में 1.24 करोड़। लेकिन और नीचे आप देखेंगे धारवाड़ है, तिरुपति है, पलक्कड़ है, जो नए नए आ रहे हैं, जो हमारे के साथ में अपने इनिशियल मास में कहा था कि जो यंग आईआईटीज हैं उनके प्रपोजल्स नहीं आ रहे, उनको हम पैसा नहीं दे रहे। और डिफरेंस कितना आप यदि देखिएगा ऊपर से लेके नीचे तक, तो आप किसी को 52.60 करोड़ देते हैं और किसी को आप 1 करोड़ से भी कम देते हैं, 19 लाख, 25 लाख, 71 लाख, 40 लाख दे रहे हैं। एक ही सिस्टम से जो बच्चे, जो रिसर्चर्स अलग अलग आईटी में जाते हैं, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम मिलता है। जहाँ पे हम 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और जहाँ पे हम 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेम नहीं होगी रिसर्चर्स के लिए। अपॉर्चुनिटी सेम नहीं होगी तो जो आउटपुट है या आउटकम है वो भी जो है सेम नहीं होगा। सो वी हैव टू एप्रिशिएट कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो हमको भी एप्रिशिएट करना है डिपार्टमेंट, और आपको भी करना है कि जो आपके पास रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स जो आए हैं उनके साथ आपको चूंकि जस्टिस करना है, तो यू हैव टू राइट गुड प्रपोजल्स, यू हैव टू सेंड गुड प्रपोजल। कोहली साहब ने कहा कि अच्छे प्रपोजल नहीं आएंगे तो ही डज नॉट डिसाइड, और इफ इट डज नॉट डिसाइड, इट इज डिसाइडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी। तो ये जो मौका मिला है उसमें हम सबको एक दूसरे से के प्रोफाइल को समझते हुए उनसे ये चीज़ सीखने की जरूरत है। जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप बाकी स्टेट्स में देखिएगा, अभी तो मैंने आपको आईटी का डेटा दिखाया, तो वैसे आपको सारे इंस्टीट्यूशन का डेटा दिखाऊं सारे स्टेट्स का। कुछ स्टेट्स में 500 से ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस को ग्रांट मिलता है, और बिहार से मैक्सिमम एक साल में 3 से 4 या 5 को मिलता है। यदि कन्वर्जन रेट भी आप देखेंगे 100% का कन्वर्जन रेट भी करें तो 20 तक पहुंचेगा, क्योंकि 20 से ज़्यादा प्रपोजल हमारे पास आते नहीं है। तो जब तक आपके नंबर ऑफ प्रपोजल्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी सूबे की, किसी भी प्रांत की जो सूरत हाल है उसको आप बदल नहीं सकते। और ये डेटा मैं किसी पेन ड्राइव में लेके नहीं आया, दिस इज इन पब्लिक डोमेन। वी हैव पुट ऑल दिस डेटा, जो पूरे एसएनटी का लैंडस्केप है, इंडिया का गवर्नमेंट का लैंडस्केप, दैट इज ऑल पब्लिकली अवेलेबल। टैबलो पब्लिक में जाके वी हैव सेट अप फॉर डेटा एंड स्ट्रैटेजी यूनिट, उसके बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं जिसमें ये एक ये 5 साल का डेटा है, 5 साल का डेटा। दिस इज ओनली फॉर आईआईटीज। यदि पूरा का आपको दिखाऊं तो 2,000 करोड़ जो दिखाए थे टोटल ये आईआईटीज का सर, आईआईटीज का दिखा है। अभी जब से बिहार में आते हैं सर, तो ये पूरे 17-18 से लेके अब तक के, जिसमें आप आईआईटी पटना का ऊपर देख लीजिए कि आईआईटी पटना को जो कोर ग्रांट देते हैं वो, और जो उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 8 कंपनी है विश्लेषण, उसका पैसा है, और जो दूसरी इनके पास एक कंपनी है, इन तीनों का भी आप निकालते हैं टोटल 5 साल में 43 करोड़ रुपए 44 करोड़ रुपए दिए आईआईटी बिहार का। उसमें से 25 और 30 करोड़ रुपए हमने आईआईटी पटना को दिया, और 14 करोड़ में आपका पूरा जो है बिहार के सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे इसमें शामिल है। इंस्टीट्यूशन के होने और नहीं होने से बहुत फर्क पड़ता है। यदि आपके पास आईआईटी पटना नहीं होता तो आपके पास आज की तारीख में 44 करोड़ की जगह 12-13 करोड़ रुपए आपके पास होते। और आईआईटी पटना के आगे चूंकि आईआईटी लिखा है एंड दैट कैरीज क्रेडिबिलिटी, इसीलिए डीएसटी ने उसको पैसा दिया। आईआईटी की जगह ये टीआईटी लिखा होता तो शायद वो भी आपको नहीं मिला होता, इवन हैविंग सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेम काइंड ऑफ फैसिलिटीज। तो कहने की सिर्फ बात जो मैं आप सबसे कह रहा था कि इंस्टीट्यूशंस को बढ़ने दीजिए, इंस्टीट्यूशंस का नाम होने दीजिए, और जब आपका ब्रांड कमजोर हो तो आप स्ट्रॉन्गर ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं, राइट? और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब स्टेज पे देख रहा था तो जो हमारे सेक्रेटरी टीडीपी हैं राजेश पाठक जी, उनके बगल में उनके आईआईटी और उनके आईआईएम के कलीग साथ बैठे हैं। उनके जो 2 सक्सेस एग्जाम्पल हैं वो एक बाएं एक दाएं तरफ लेके बैठे हैं। सो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, राइट? कि जो मेरे पास चीज शोकेस करने के लिए वो मैं शोकेस कर रहा हूँ। दिस इज वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट। सो आपके पास जो कुछ भी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को आप सामने ला करके रखिए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो लोकल है उसके बारे में वोकल होना चाहिए। आपके प्रॉब्लम्स में मैं कुछ समय पहले आईआईटी मद्रास में था,
प्रोग्राम पे रिव्यू किए थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, बट मैं जब गया था उसमें चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, इट वाज फ्लडेड, पीपल वर क्राइंग। हमें कहा आप इतना एआई, इतने सेंसर्स की बात करते हैं, बट यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर योर ओन सिटी। So if IIT Madras is solving problems of this universe and not of the city, then you are missing a plot. तो बिहार में इतनी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास जो TIH है या आपके पास जो और फैसिलिटीज DST की तरफ से आ रही है, I think this is the right way to connect with people. People should know कि IIT Patna is not doing a job kind of British government कि यहाँ से पैसे लेकर मैनचेस्टर में लगा रही है, मतलब वी आर डूइंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार प्राइमरली, एंड देन बाकी और चीजें भी हम करते हैं और कर सकते हैं, उससे आप लोगों में फेथ जोड़ेंगे। पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि शुरू में पटना का आदमी IIT पटना में नहीं आना चाहता था, उसको फेथ नहीं। अब आज की तारीख में जो बिहार के बच्चे हैं वो IIT पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब दे leave some so-called better IITs and come to IIT Patna. Now we have students from 23 states here. Yes. So ये जो confidence है, ये आपको build करना पड़ेगा। आप कैसे build करेंगे ये आपको होगा। एक छोटा सा आपको और डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ताकि आपको जो मैं कहानी कहना चाहता हूँ वो शायद बेहतर तरीके से कर पाऊँ। साहित्य का आदमी आपको कहानी सुना सकता है, उसका होता नहीं है। Let's do it. By the way, with marketing, मैं भी सीख रहा हूँ, so I must tell you that यहाँ भाषा में प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर सकते, जैसे नए IIT आ रहे हैं, हाँ तो जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड IIT जी जी तो रैंकिंग करके इनको ज़्यादा करना तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अभी कभी कर रहे हैं सर, हमारे जो सेक्रेटरी हैं उसी दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों को कह भी रहे हैं कि बहुत हो गया। हमारे स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग हुई तो उसमें एक एजेंडा ये भी था कि कैसे जिनको हमने बहुत ज़्यादा दे दिया उसको थोड़े दिन के लिए एक ब्रेक देके और बाकी चीज़ों को हम सपोर्ट करें। सर इसमें एक ये जो डैशबोर्ड है, इसमें जो 4 रंग हैं, जो हमारी 4 स्कीम है, ब्लू, मैं बिहार में पढ़ा हूँ, बिहार में रंग तो कम होते थे, मतलब शुरू में मतलब लाल पीला हरा होता था। अब मेरी 2 बेटियां हैं तो बोलती है कि नहीं पता नहीं ये कौन सा पर्पल और ये कौन सा, ये मतलब बहुत तरह मेजेंटा पता नहीं क्या होता है। हमारे टाइम में 3-4 कलर, लाल पीला हरा टाइप से कुछ कलर होता था, तो इसमें 4 कलर है। तो इस 4 कलर में जो ब्लू है वो इनोवेशन स्कीम है हमारी, जो दूसरा येलो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चौथा जो है इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 4 कलर आप इसलिए अप्रिशिएट करिए कि जो चौथा कलर सबसे नीचे जो आप उसको हरा कहिए जो भी कहिए, नीचे वाला कलर ये सब जगह होगा। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा, मतलब उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी का टॉप 1% है वो एलिजिबल होता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप। तो ये सारे स्टेट को मिलता है। लेकिन यदि मैं कोई एक बेंचमार्क देखता हूँ जिसमें कि किसी स्टेट की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको समझना हो, मैं एक स्कीम आपको दिखाता हूँ सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारी एक स्कीम जिसमें कि हम R&D में स्टेट्स में पैसा लगाते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए हम करीब 44%, 44.18% जो है हमारा R&D का पैसा एक स्टेट में जाता है। मैं पूरे रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। आप यदि बिहार में आइएगा तो उसको 0.17% 0.17% आपके बिहार में पैसा आता है R&D में, राइट। ये क्या हमको दिखाता है कि अब जब मैं फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, फाइनेंस कमीशन को बहुत कम पैसा लगता है, फाइनेंस कमीशन का महाराष्ट्र को बहुत कम पैसा लगता है, बिकॉज आपके पास इतने और रिसोर्सेज हैं अपनी तरक्की के लिए कि आपको इसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं। बिहार में चूंकि आप 0.17% R&D कर रहे थे, इसीलिए आपको फाइनेंस कमीशन से फिर आपको कंपनसेट कर रहा था। ये बिल्कुल सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। If you do R&D, your people will be best relied in government resources.
लेकिन आप यदि जी ये 44% किसके महाराष्ट्र में किन इंस्टीट्यूशन के पास जा रहा है? सर उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, आई कैन शो यू द लिस्ट कि किसके पास जा रहा है। IIT तो होगा ही होगा और भी सारे जा रहे हैं जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज। आई जस्ट आपको दूसरी स्कीम भी दिखाता हूँ, प्राइवेट वन शोलापुर यहाँ वहाँ सब जगह जाता है। सो आप देखिए कि शुरू के 5-6 जो स्टेट्स हैं उसमें हमारे 80% रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं, और फिर बाकी 20% में यू सर किस आधार पर इतना ज्यादा वो लोग खींच रहे हैं पैसा? इसीलिए क्लाइमेक्स होता है ऐसा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर बहुत कम होता है। सो आई एम जस्ट आपको अब पूना में मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ज़्यादा कंट्री में। सॉरी, पूना में मैक्सिमम एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यही मैं कह रहा हूँ सर कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस डू मैटर। मतलब आपके पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है तो आपके पास आएंगे नहीं प्रपोजल, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होंगे तो आएंगे। अब यदि इनोवेशन में देखिएगा सर, इनोवेशन में जैसे दिल्ली के पास जो है वो 70 है, महाराष्ट्र में जो है वो करीब 15% के आसपास है। यहाँ भी बिहार में आप देखिएगा कि 0.40%, आधा % भी नहीं है, मतलब जो हमारा इनोवेशन का बजट है उसमें भी नहीं। आप यदि फिर इसमें आते हैं, फिर आप देखिएगा कि जो ये वाला रन रेट तो भी नहीं है, सॉरी काम करने वाले लोग कम है, इसीलिए आ रहे हैं पैसा सुनता है। इंस्टीट्यूशन नहीं है बेसिकली। आप यदि इंस्टीट्यूशन बिल्ड नहीं करिएगा तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा मैं भी तो काम आप पता नहीं उसमें एग्री नहीं करता, मुझे काम करने की जगह के बाहर जाना है। इंस्टीट्यूशन यदि बनेगा तो मैन पावर आएगा, मैं इंस्टीट्यूशन तो लोग आए। दूसरा कि इसमें लॉट ऑफ फंडिंग इज जो इंडस्ट्री के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ इंडस्ट्री भी नजर आते हैं, पुणे में इंडस्ट्री भी है आपकी, वो भी एक एस्पेक्ट। अब आपको मैं कोई प्लांट मशीनरी के लिए 50 करोड़ का कोई सा आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं, आप मशीन खरीद देते हैं, आप 5 साल के बाद बोले मेरे पास मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री का कनेक्ट नहीं है। इंडस्ट्री के लिए आप खोलेंगे नहीं, यूजर चार्जेस आपके पास आएंगे नहीं, नॉट एबल टू मेंटेन दैट मशीन। तो आपको ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि IIT पटना इज ओपनिंग इट्स डोर फॉर ऑल इंडस्ट्रीज सराउंडिंग दिस सिटी और एडजॉइनिंग स्टेट्स झारखंड के लिए, या बंगाल का निचला हिस्सा है जो बिहार से मिलता है, आप और भी लोगों को, या जो स्टार्टअप्स हैं, इतने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बीकानेर से लोग यहाँ आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं। तो दिव्यांशु बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बिहार में स्टार्टअप्स के लिए। उन्होंने जिस तरह से नेटवर्किंग की है, बाकी लोगों को जिस तरह से मोबिलाइज किया है, इस तरह के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे तो सिर्फ इनका भला नहीं होगा, आपके पास जो यंगस्टर्स हैं जो अभी बीटेक में हैं या फाइनल ईयर्स में हैं, उनको बजाय इसके कोई पैकेज लेके कहीं नौकरी करने जाए, जैसे जिन लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, आपको और इस तरह के प्रतीक और बनकर मिलेंगे आपको, जो चीज़ें आपको बना के दे सकते हैं। आपके अपने लोग होंगे जो यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहेंगे बजाय कि हम इनको तकलीफ दें दिल्ली से आके यहाँ करने के लिए। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दीज डैशबोर्ड्स कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना जो डेटा स्ट्रेटजी बनाया है उसमें सारी स्कीम्स का वो डेटा लेकर के और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम institutions like IITs, जो individual researchers हैं, मतलब they should look at this data and try to create an ecosystem which helps us grow। और बिहार को लेकर के मैं सर को बता रहा जब आ रहे थे कि इस रास्ते में आप देखिए, मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप किस रास्ते से आए। खगोल से लेके जो तरेगना है आगे, आप सोच नहीं सकते कि एस्ट्रोनॉमी में या उस तरह के साइंसेज में हम हजारों साल पहले कहाँ। खगोल जो है, खगोल शास्त्र जो है उससे उसका खगोल करना, तरेगना जो है वो जो कुछ कॉस्मोस बनते हैं वो दुनिया से वहीं पे देखते हैं, और ये आज से 1000 साल पहले हमारी जानकारी है। तो ये इस पूरे खगोल से लेके तरेगना के बीच में आएगी ये है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस परंपरा को आगे बढ़ाने की। सो मैं DST की तरफ से कुछ लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप फॉर्मेलिटी में जो बाद में करें कोहली साहब इतना टाइम लेकर के हाथ से आए और उन्होंने जितनी दरियादिली दिखाई है, और एक आदमी का नाम मैं लेना चाहता हूँ। इस
ये इसकी शुरुआत, यदि मैं गलत होगा तो सर आप मुझे करेक्ट करिएगा, एक आदमी का क्रेडिट हो जाता है। हमारे मनोज कुमार हैं डायरेक्टर फाइनेंस, सबसे पहले उन्होंने इसका बीज बोया कि सर IIT पटना में कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज सपोर्ट दैट, एंड उन्होंने सबसे पहले ट्राई टू रिक्वेस्ट जी। IIT पटना में फिस्ट TBI प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, उसमें कोहली साहब और मनोज कुमार साहब दोनों ही के कंट्रीब्यूशन और क्योंकि हमारे सहायक साहब अभी कमरे में नहीं है, मैं बॉस आई मस्ट टेल यू सामने पढ़ाई नहीं कर रहा, आएंगे तो बोलो। नहीं पीछे ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ। इनसे पॉजिटिव आदमी मैंने अपने 26 साल के करियर में नहीं देखा है, तो आपके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे प्रोग्राम भेजिए और उसका तरह से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ठाकुर साहब अपनी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। और ये डेटा से बहुत सारे हैं इसमें डैशबोर्ड, आप किसी भी तरह का उस पर डेटा दे करके आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। I would like to take one opportunity जो आपने सर अभी बताया कि जब आ रहे थे खगोल से और करंटना होते हुए, that is the place where thousands of years ago pi was invented and zero was invented by Aryabhat. And whatever, just in one of the previous session, I requested that when DST can create an autonomous R&D institution like SN Bose at Kolkata, why cannot an Aryabhat center come up here in that locality? I think since entire IFT division of DST here, they can suggest us ways and means how to proceed further in that direction. एक छोटी सी चीज Aryabhat नॉलेज यूनिवर्सिटी स्टेट में छोड़ दीजिए, एक डिपार्टमेंट इस पे लिखा गया। एक छोटी सी बात ये कर रहा था कि देखिए ये जो सेंटर है आज की तारीख में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नए इंस्टीट्यूशन के बनने पे पाबंदी है, लेकिन आप यदि कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं उसके सपोर्ट के लिए या किसी एक अपॉर्चुन टाइम में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन अप करते ये संभावना है। एक छोटी सी चीज और आपको कहना चाहता हूँ, जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज से हैं बिहार के, एक हमारी जितनी भी हमारी स्कीम है, कोहली साहब यहाँ बैठे हैं इनको पता है बाकी लोगों को, कि हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मतलब एकमात्र हमारा DST है पूरे भारत सरकार में साइंटिफिक डिपार्टमेंट में, जिसकी स्कीम का 8.3%, आप लोगों के लिए भी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि 8.3% उसका बजट शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए है और 4.3% बजट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के कल्याण के लिए। और उसमें है क्या कि टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट उनके बेनिफिट के लिए कैसे हो सकता है, किसी टेक्नोलॉजी से कैसे उस कम्युनिटी का आप भला कर सकते हैं। हम लोग बहुत संघर्ष करते हैं उसमें अच्छे प्रपोजल के लिए। आप कॉलेज के थ्रू, अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू, अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको जरूर भेजिए कि आप कैसे किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अनुसूचित जाति और जनजाति के भलाई के लिए आप कोई काम कर सकते हैं। और आप जितना भेजेंगे आपका सोसाइटी से कनेक्ट उतना बढ़ेगा और हमारे पास जो है क्वालिटी प्रपोजल आएंगे। बहुत दुख होता है कि हम करीब 350-400 करोड़ रुपए हर एक साल लेके बैठे रहते हैं और कोई प्रपोजल लेने वाला नहीं होता। फाइनली हम फिर किसी तरह के वो पेपर पर लिखने के इसमें दे देते हैं, विच इज नॉट गुड। तो वो हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है कि आप कम से कम इस चीज के लिए, उसके लिए हमेशा खुला रहता है कॉल, स्पेशल कॉल जो होता है। उसके अलावा जिस भी प्रपोजल में आप वो SC/ST का कंपोनेंट डालना चाहें वो जरूर डालिए और हमारे जैसे राज्यों को बहुत जरूरत है इस तरह की चीजों की। थैंक यू, आपके समय का बहुत शुक्रिया। Thank you, sir, for such an illuminating show of data. Now I request Professor Aulin Thakur to hand over the memento to Shri Akhilesh Jha. So it's just a token of regards for your time over here. Now I request Dr. Ajay Thakur, who is head of Department of Physics, to hand over the memento to Shri Devramshi Verma.
now I invite Shri Tanmay Bhankar. And finally, Shri Prateek Sharma. So with this, this panel discussion comes to an end. Thank you all for listening and speaking in this. One small announcement, today's session is closed. We are closed for today. And tomorrow morning we have a very important talk at 10:30, starting at 10:30, where one of the path-breaking company chairperson, Dr. Krishna Imella, has already arrived. He will be delivering a talk tomorrow morning at 10:30. So I think you all to be interested. Please be there. कीजिए